देखें, compression is an act when we apply few algorithms, mainly mathematical approaches, और हम क्या करते हैं, हम उससे फाइल का साइज कम कर देते हैं। फाइल का साइज कम करने का फायदा ये होता है कि एक्चुअल फाइल के साइज से जो फाइल का साइज है वो छोटा हो जाता है। It was very popular, it became popular back in 90s and early 2000s, or maybe in the middle of the 2000s, when the computer's internet speed was very slow. So people wanted to send more data in less time. So they used to compress the data and send it over. And at the destination, people used to decompress it to bring it to the form where it was produced. तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि आप जो हैं डेटा को भेजने से पहले कंप्रेस करें, उस पर सॉफ्टवेयर अप्लाई करें, सॉफ्टवेयर अपनी ट्रिक्स अप्लाई करके डेटा को रिड्यूस करेगा और फिर डेटा को जो है वो ओवर द इंटरनेट भेज देगा, ओवर द इंटरनेट भेज देगा। और जब वो कोई रिसीव करेगा तो उसको डीकम्प्रेस करके और इस्तेमाल कर लेगा। या जब आपको स्टोर करना हो, जब आपके पास स्टोरेज कम है एंड यू वांट टू स्टोर सो मेनी डिफरेंट फाइल्स, तो इन दैट केस क्या करेंगे आप डेटा को कंप्रेस करके उसको सेव कर लेंगे। आपको आर्काइव बनानी है डेटा की, बैकअप्स करनी है, तो आप कंप्रेस करके करें, आप ओरिजिनल फाइल्स को ना रखें। ऑलराइट, सो आप ओरिजिनल फाइल्स को ना रखें। सो what does it mean? It means, why do we need compression? We need compression to conserve on space and to send more data in less time over the internet. There are two types of compressions: lossy and lossless. Lossy means we lose the data which we actually cut off from the file in order to make the file smaller. This is only where we can afford to do so. Where we can afford to do so. For example, if it is sound, we know that we can hear between 2K and 20K frequencies. If your data, your file also contains data less than 2K या 20K से 20K से ज़्यादा का data है, तो उस सूरत में आप उसको cut off कर दें, automatically बहुत सारे bits कम हो जाएंगे. Let's say you have recorded a video 60 frames per second. आप उसमें से 20-25 frames निकाल भी दें तो लोगों को इतना एहसास नहीं होगा अगर वो छोटी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। तो आपने उन फ्रेम्स को काटा, हर सेकंड में 25 फ्रेम काटे, ओवरऑल पूरी वीडियो में बहुत ज्यादा साइज कम हो जाएगा। We cannot watch more than, let's say, 10 million colors, but still our films, our images have 16.8 million colors. So you can always drop 6.8 million colors and people would not notice it. Similarly, आपने images कम किए, colors कम किए, आपकी पूरी की पूरी वीडियो का साइज कम हो गया। आपने साउंड में से frequencies कम कर दी, उसका साइज कम हो गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? आपकी साइज फाइल का जो है वो आपकी फाइल का साइज जो है वो श्रिंक हो गया। श्रिंक होने से अब आप उसको अपने पास आसानी से स्टोर कर सकते हैं। कुछ फाइल की फॉर्मेट्स, जैसा कि आप जब सेल फोन में तस्वीर खींचते हैं तो आपका फोन जो है जो डिफॉल्ट फॉर्मेट बनाता है वो होती है JPEG, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपोर्ट .jpg या JPEG. That is a compression. Means your computer, your cell phone automatically compress the movie or the picture, the image that you take using its camera. And whatever the data that is shed off, उसको हमें जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टिल जो आपके कैमरा ने तस्वीर लिया, आप उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन कि बड़ी अच्छी तस्वीर है। So this is called lossy, that you have lost some data but you don't care about it because that loss would not mean anything as far as the originality of the data or the understanding of the data matters. So we have lost some data and we can we can bear the data loss. The data loss is borne, so no issues. So lossy, अब लॉसी हम कहाँ कर सकते हैं? हम इमेजेस में कर सकते हैं, हम साउंड में कर सकते हैं, हम एनिमेशंस में कर सकते हैं, हम वीडियोस में कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स
हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैरेक्टर्स सेव कर रहे हैं, कैरेक्टर्स, ए एक कैरेक्टर है जिसका कोड है 65 एस्की कोड, और आपने एक बिट ऊपर नीचे कर दिया तो उसने 65 रहना नहीं है। जब उसने 65 नहीं रहना तो ए नहीं रहना, वो तो कुछ और बन जाएगा। So to avoid, we will refrain ourselves from compressing text, characters, or the numbers themselves. We refrain ourselves from it. So इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप उसको जब कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस तो आप कर सकते हैं, बट यू शुड adapt a technique where you can decompress the data to its original form. One of the methods is run length encoding. Remember, run length encoding for lossless data is not part of your syllabus. This is just an example. For example, these are the bits. So we can say 4 zeros, 1 1, 3 1 zeros, 1 0 1 0 1 0, and 5 zeros and 6 ones and 2 zeros. As you can see that the size of this number, let's say these are bytes per digit. So यहाँ पर हमारे पास 4 हैं तो यहाँ पे 2 में हो गया काम, यहाँ पर हमारे पास 6 हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 में हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कम कर दिया इसका साइज। जब हमें डीकम्प्रेस करना होगा तो हम इसको पढ़ेंगे, 4 जीरोस प्रोड्यूस करेंगे, फिर 1 1 प्रोड्यूस करेंगे, फिर 3 1 जीरोस प्रोड्यूस करेंगे, फिर 5 जीरो, तो हमारे पास ओरिजिनल डेटा वापस आ जाएगा। ये थोड़ी सी लेम एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप इसको टेक्स्ट के साथ करेंगे तो मतलब अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टेक्स्ट है, कंपेयर टेक्स्ट फाइल्स इन अ कंप्यूटर आफ्टर फाइल कंप्रेशन। अब इसमें हम सिमिलर पैटर्न तलाश करते हैं। ये देखें COMP यहाँ पर भी आ रहा है, COMP यहाँ पर भी आ रहा है, तो हमने की बना ली कि हम COMP को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने देखें यहाँ पर 1 लिख दिया, COMP की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे भी COMP की जगह 1 लिख दिया, और यहाँ पर भी COMP की जगह पे 1 लिख दिया, कंप्यूटर में भी COMP की जगह 1। अब क्या हुआ, COMP ये 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, टोटल 12 कैरेक्टर्स होगा। उसमें से हमने कितने लिखे, सिर्फ एक यहाँ और एक यहाँ, तो हमने सिर्फ 3 लिखे, हमने 9 कैरेक्टर्स कंप्रेस कर दिए। फिर आप देखें TER यहाँ पर भी आ रहा है, TER यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब इन 6 कैरेक्टर्स को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, इधर भी और इधर भी। फिर आप देखें आपने यहाँ पे फाइल लिखा, यहाँ पर भी फाइल लिखा, FILE 4 कैरेक्टर इधर 4 कैरेक्टर इधर, इसको हमने 3 से रिप्लेस कर दिया, सही है। तो यहाँ पे कंपेयर क्या बन गया, 1 ARE स्पेस टेक्स्ट स्पेस 3S मीन्स फाइल्स इन अ कंप्यूटर को हमने क्या लिख दिया, 1U2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स को हमने 3 कैरेक्टर्स से चेंज कर दिया। आफ्टर को हमने लिख दिया AF2, फाइल लिख दिया 3, और कंप्रेशन को हमने लिख दिया 1 प्रेशन। तो क्या हुआ, ओवरऑल टेक्स्ट की लेंथ कम हो गई। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, वो अगला रिसीव करेगा, तो इसको डीकम्प्रेस कैसे करेगा, इसको पढ़ेगा और इसकी की के हिसाब से इसको चेंज कर देगा। की इसके साथ होगी कि 1 को COMP से कंपेयर करना, रिप्लेस करना है, 2 को COMP से रिप्लेस करना है, 3 को FILE से रिप्लेस करना है, तो पूरा का पूरा डेटा अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा, and you can then use it. So this is compression. So what is compression? Compression is an act where the size of the file is reduced. Why do we reduce it? To take less space over the hard disk for the file to be saved, and take less bandwidth over the network so that the file could be transferred in less time. So preserve on storage, preserve on internet speed. This is compression. There are 2 types of compression where we can lose the data and we don't want it back. So data is lost and we don't want it back. That is lossy, and still it works. Most of the formats nowadays, JPEG, MP3, MP4,
PNG, GIF, they all are actually compressions. And computers are, these are so much common that all computers know them. जब हम WhatsApp पे तस्वीर भेजते हैं तो वो JPEG में होती है, JPEG में दिखाई जाती है, कोई इशू नहीं होता. आप तस्वीर कैमरा पे खींचते हो, वो JPEG में होती है. Every computer knows what JPEG is. You just transfer it. JPEG is a lossy data compression. And then we have got lossless, where we do reduce the file size, but first, before we make use of it again, we decompress it. We bring it back to the form, जहाँ पर उसकी actual shape वापस आती है ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें. हम उसको compressed form में इस्तेमाल नहीं कर सकते because sometimes we cannot afford to lose a single bit even. So lossless data in lossless compression, data is reduced and recovered when uncompressed. और इसकी examples जो है वो zip है, WinRAR है, if you might have used it. Zip is part of the Windows operating system. जिस फाइल को भी आप compress करना चाहते हैं उस पर आप right click करके send to कर दें zip file, और जो receive करेगा उस पर ऐसे double click करेगा वो unzip हो जाएगी. Whereas MP3, JPEG, GIF, PNG, MP4, they all are lossy data compressions.